महिमा दीदी नमस्ते दीदी। आपके लाइव में नहीं आ पाए। फोन आ गया, बात करने लगी थी इसीलिए। अभी 10 मिनट पहले उठी हूँ इसीलिए नहीं आ पाई महिमा दीदी। राधे राधे सबको। 8 मिनट का। ठीक है ठीक है। ठीक है महिमा दीदी। अभी कितना देर आप लाइव चलाओगी महिमा दीदी? कितना देर तक लाइव चलाओगी? सात 21 से कर रही हूँ। हम्म। आठ बजे तक। अच्छा अब तो आधा ही घंटा बचा है। अब तो आधा ही घंटा बचा है। फोन आ गया था इसीलिए हम नहीं आ पाए। अच्छा कर रही हूँ। ठीक है महिमा दीदी। अभी तो आपका लाइव ही चल रहा है। ये देखो आपका प्रचार आ रहा है। आज तो प्लेलिस्ट में नहीं जाना पड़ा है। हाँ तो ऐसे ही प्रचार आने लगे। अच्छा आज बहुत दिन के बाद लॉन्ग वीडियो डाली हो महिमा दीदी। ना आज बहुत दिन के बाद लॉन्ग वीडियो डाली हो। राधे राधे। सपोर्ट मत करो। नहीं नहीं ये तो आपका लॉन्ग वीडियो है। आपका लॉन्ग वीडियो है जो 8 मिनट वाला है। मेरा वीडियो आज ये डाला है। हाँ हाँ यही वाला है ना। यही वाला है ना महिमा दीदी देखो आज ही डाली हूँ। और आप लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही थी। यही वाला है ना। हाँ हाँ लगा कर रखे हैं। इतना टाइम पता कहीं नेटवर्क नहीं रहता है, हमेशा जीरो वाचिंग ही दिखता है। राधे राधे सब। हम्म। वैसे तो फ्रेंड्स हम कहीं और जाने वाले थे, लेकिन जहाँ जाने वाले थे वो जगह एक हफ्ते के लिए बुक कर लिया था। फिर वहाँ से हम लोग बच्चे पूछे बच्चे आपको कहाँ जाना है, तो बच्चे बोले मॉल में लेके चलो, तो मॉल में लेके गए। वहाँ पे बच्चे बहुत सारा चल रहा है आपका। बच्चे एंजॉय कर बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे और हमारा भी थोड़ा शॉपिंग भी हो गया था। मॉल में गए थे तो मुझे भी लगा था थोड़ा शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो हम भी थोड़ा शॉपिंग कर लिए। सोची थी आने के लिए लेकिन आज
5 ही बजे से फोन में बात कर रही थी। और एक मोबाइल में जो है बात करूंगी ना तो वाईफाई रहता है, दूसरा मोबाइल का भी नेट नहीं चलता है, इसीलिए नहीं आ पाई थी आपके लाइन। नहीं तो आती है। अच्छा, मोनेटाइज होने के बाद बड़ा बड़ा लॉन्ग वीडियो डाला जाता है क्या महिमा दीदी? सीमा दीदी नमस्ते दीदी, बड़े राध राम राम बड़ी दीदी। आज हमारे भैया नहीं आए, हमारे लिए फिर सुन लग रहा है बड़ी दीदी। हम्म आज हमारे प्रदीप भैया नहीं आए तो लाइव सुना ही लग रहा है। बताए थे कहीं जाने वाले हैं, सुबह के लाइव में बताए थे। राधे राधे सभी। लाइव कर रही हूँ। अच्छा दीदी। हाँ, राधे राधे सभी को जरूर से। आज हमारे प्रदीप भैया की जगह हमारी बड़ी दीदी है सीमा दीदी। राधे राधे सभी को। ना बड़ी दीदी, दोनों आईडी से लाइक कर दिए। यही हमारे प्रदीप भैया और सीमा दीदी ही तो सपोर्ट इतना अच्छे से करती है। हाँ हाँ, कहाँ गई हो घूमने महिमा दीदी? सही कह रही हूँ कि हाँ, उमेश भैया नमस्ते, प्रणाम भैया जी कर रही हूँ। कोई बात नहीं बड़ी दीदी। महिमा दीदी कहाँ गई हो? महिमा दीदी ठीक है, आराम से घूम टहल रही हैं, मौज उड़ा। राधे राधे। उमेश भैया और बताओ, तबीयत ठीक क्या हो रहा है भैया? अच्छा अच्छा, मंदिर में। अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ का सीन। पड़ोसी वाली दीदी नमस्ते, प्रणाम, क्या हाल चाल है? भैया पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है दीदी। राधे राधे सभी को, जय जय सिया राम। भैया माता रानी की बात नहीं है भाई। मूवी चल रहा है महिमा दीदी।
ये बहन, आपकी भाभी कह रही हैं हमसे आप बड़ी। हाँ, अब भाई हम आपको देखे नहीं है, बताओ अब आप ही बता। आप तो हमको देख रहे हो, लेकिन हम आपको नहीं देखे हैं, तो भैया बताओ, आप ही बता सकते हैं। एक भी वीडियो भी तो नहीं डाले हो। भैया हम साल और नहीं जा बताएंगे। आप बता दो, आप जो समझो वही ठीक है। भैया आप बताओ, आप तो हमको देख रही हो। भैया बहन घर पर कोई आया है, कोई फोन कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। भाभी से पूछो कि हम उनको कितने साल के लग रही हैं, तब हम बता देंगे भैया। ये ना लाइक भी कर दें। हाँ हाँ, लाइक की याद धरवा दी हूँ, लाइक कर दिए हैं दीदी। 10,000 स्टेप्स दिख रहा है कि नहीं? महिमा दीदी, विश्वास ही सब कुछ है। हुआ था 94 भाई। पता नहीं, हम सर नहीं जानते हैं। 94 अभी देखकर बताएंगे भाई, इस समय नहीं, हमें लग रहा है वैसे 94 के है भैया। 94 बकरी पड़ोसी दीदी फैसला नहीं, फैसला हम तो बता दिए हैं। अब आप बताइए। सन पूछ रहे हैं, सन बता दिए हैं। अब भाभी जी से पूछो कौन बड़ी है कौन छोट। खत्म हो गया है महिमा दीदी, देखो अब आपका लाइव चल रहा है। हाँ महिमा दीदी। चौरान 94 84 नहीं 94। बाय बाय महिमा दीदी। अब जोड़ घटा कर बताओ भैया, कल सपोर्ट करूंगी। ठीक है महिमा, कोई बात नहीं महिमा दीदी। अब हम उनका नहीं जानते हैं भैया, अब इतना हम खोज नहीं करते हैं। अब उनसे पूछबा तो सही बताऊबा ना करिए, जो उन्हें मनमाए हुए बता रही हैं। अब उन्हें पूछा एफएम हुई हैं। आप बताइए भाई, आप छोट हैं कि बड़े, आप बताइए, सही सही बताना भैया। भाभी जी से पूछ कर बताइए। लाला पंडित जी हमारे लाइव में आपका स्वागत है। राधे राधे भैया। जय जय सिया राम। हाँ।
आप हमको बताइए भाई, अब हम बता दिए हैं तो भाभी से पूछ कर बताइए। हाँ, हम तो बता दिए, अब शिवानी दीदी को हमको नहीं पता है। हम पूछती नहीं हूँ भाई। शिवानी दीदी तो हमें लग रहा है सबसे छोटी लगती हैं, मतलब इतनी पतली दुबली है, देखकर तो कोई नहीं बता पाएंगे। उनको अगर कोई देखेंगे तो बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी हाँ। अच्छा भैया। देखो उमेश भैया कितना चालाक है, हमसे पूछ लिए हैं और बता नहीं रहे हैं। अब बताओ कि आप बड़े हो कि छोट हो। हाँ, तभी तो हम जानेंगे भाई। अच्छा अच्छा दीदी। उमेश भाई अब आप बताओ। खाली इतना बता दो, बड़े हो कि छोटे, बस, और क्या। शिवानी दीदी तो हमारी बड़ी दीदी है। राधे राधे सभी को, जय जय श्री राम। उनको रख दीजिए। बड़ी दीदी ऑन करके रख दो। हाँ, वैसे इतना टाइम नेटवर्क कारण जैसे वॉचिंग नहीं दिखता है, ऑन करके रख दो। हाँ, काम कर लो दीदी। पड़ोसी दीदी भोजन बन गया। अभी उनकी बगल के ननद आई हैं, अभी इतना जल्दी भोजन बनाएंगी। फैसला कल होगा पंडित जी का, हर कार्ड में देख कर। जो कौन सा है। अच्छा भैया। ठीक है भाई, आएंगे तो हम पूछ कर बताएंगे। फैसला कल होगा तो। वैसे हमसे ज़्यादा नहीं है उनका सन, मतलब वही थोड़ा आगे होगा और ज़्यादा नहीं है भाई। पूछ कर ही बताएंगे भैया। लेकिन उमेश भैया हमको दीदी देखो मत बोलने लगना। हाँ, हमारा नाम ही लेकर बुलाना भाई। ठीक है भैया।
नाम ही लेकर बुलाना भैया। पहले आप एक वीडियो डालो ना उस पर, अपने चैनल पर एक वीडियो डाल दो भैया, तभी तो जाने। हाँ, शिवानी दीदी से पूछेंगे। हम्म, अभी नहीं बना रहे हैं भैया जी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। हम पूछेंगे, वो बता ही देंगे कि हमसे बड़े हैं, क्योंकि वो हमको भी देखे हैं, आपको भी देखे हैं भैया। तो अगर हम पूछेंगे तो वो बता ही देंगे कि आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। डीपी लगा है, पता नहीं चलता है। डीपी से तो हमको पता चल रहा है भाई, हम क्या बताएं आपके। उतना नहीं पता चल पा रहा है भाई, अभी गलत बता देंगे तो आप नाराज हो जाओगे, बोलोगे कि हमको ऐसे बोल रही हैं। वैसे तो हम डीपी से नहीं जानते भाई, क्योंकि शरीर सबका अलग अलग रहता है। किसी किसी का शरीर कोई मोटा रहता है, कोई पतला, बहुत लोग हैं कितना भी उम्र के हो जाए भाई, हाँ, और लेकिन जो है दिखने में लगते हैं कि बस अभी 18 ही साल के हैं। सही बोल रही हूँ नहीं भैया? बहुत लोग ऐसे हैं, सभी कह रहे हैं जैसे कि नहीं पहचान आते, इसीलिए हम पहचान नहीं रहे। हम भैया सबको बोलते हैं, बड़े छोटे सब भैया ही है। जैसे हमारे रवि भैया बोलते हैं हम लोग खाते पीते खाते पीते हैं, खानदान के हैं, वैसे बोलते हैं रवि भैया हमेशा जब आते हैं लाइव में। अब क्या करूं भाई। आप बता दो भाई, वैसे आप हमसे बड़े हो। जो न अच्छा सामान नो का हटा दे, हाँ, बिल्कुल हटा दे, फेंक दे, बिल्कुल फेंक दे। बताइए, हम नहीं होते। जैसे हमको देखने में जैसे लग रहा है हमसे बड़े हो भाई, तभी तभी हम आपको बोलते हैं भैया। अब क्या बताएं मतलब। अब आप बताइए, हमें जो समझ में आया बता दिए भाई। मोटे नहीं है, हाँ हाँ, तभी तो बता रहे हैं भाई, सबका शरीर अलग अलग रहता है।
अभी देखो कोई कोई लड़की 15 ही साल की रहती हैं, जैसे लगता है कि बहुत उम्र की हो गई है। बड़े छोटे से क्या मतलब भाई, हाँ। दीपा दीदी राधे राधे। नेपाल भाई हमारे लाइव में आपका स्वागत है, राधे राधे। सही। अब आप अब हम आपको, ये भैया मौसम गजब है। हाँ इधर भी मौसम खराब है नेपाल भाई। हाँ इधर भी बारिश हुआ था ना। राधे राधे। दीपा दीदी क्या हो रहा है? दीपा दीदी हैं कि बच्चे हैं? हाँ हाँ इधर भी बारिश हो रहा था नेपाल भाई, अभी बंद है। इधर भी बारिश हो रहा था, अभी बंद है भाई, बारिश भी नहीं हो रहा है। हमारा नेट सही से नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं नेपाल भैया। हाँ नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं भाई। सपोर्ट मतलब नेट नहीं, इस समय हमारा भी नेट नहीं चल रहा ठीक, क्योंकि जैसे कि इतना वाचिंग नहीं दिख रहा है जैसे नेट के कारण। अच्छा अच्छा आज वीडियो डाले हो भाई, ठीक है। अच्छा भैया गाड़ी खरीदे हो क्या भाई? नेपाल भाई आप गाड़ी खरीदे हो क्या? अच्छा भैया जाओ खाना, भाभी क्या कर रही हैं? आप खाना बनाओगे तो भाभी क्या करेंगे भैया जब आप खाना बनाओगे? अच्छी बात है भाई, खाना भी बनाना चाहिए, कभी कल भाभी को आराम दिला देना चाहिए भाई। हमारी दीदी जो है, बड़ी दीदी जा ही नहीं सकती है हमको छोड़कर। उमेश भैया हमारी बड़ी दीदी जा ही नहीं सकती हैं। गाड़ी हाँ हाँ नेपाल भाई, वो हमको छोड़कर कहाँ जाएंगे बताओ? हमारी बड़ी दीदी हमको छोड़कर कहाँ जाएंगे उमेश भैया? एक हमारी बड़ी दीदी, एक प्रदीप भैया ये सब हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ कहीं व्यस्त रहेंगे तो कोई बात नहीं, कहीं बिजी है तो चल जाता है।
बड़ी दीदी आप काम कर लो दीदी। हाँ, रख दो ऐसे ऑन करके। आप परेशान मत हो दीदी। बाय बाय उमेश भैया, बाय बाय। पानी में तेल तेल पानी और पानी गुलाब जल है, गुलाब जल है वो कुछ हटाई फेंका। ठंडा ही तो है। पानी का देखा क्या रह जाए देखा और ये हमारी गुलाब जल है कुछ बेकार का था हमका। गुलाब जल तो बड़ी दीदी आप भी काम कर लो, हम भी थोड़ा भोजन बना लूं। हाँ बड़ी दीदी, ऑन करके रख दो बड़ी दीदी। हम भी थोड़ा खाली सब्जी बनाना है और बन गया है। बना
बड़ी दीदी सुन रही हो तो हम आपको कुछ बताएं। बड़ी दीदी सीमा दीदी अगर सुन रही हो तो बोलो कुछ बताएं।
हाँ बोला। अबे कहाँ है, अबे निकलना है। अच्छा। हाँ?
अभय कहाँ है यार? अभय कहाँ है यार? देखा था जब हम भगा था। 1 घंटा लगा था। अब गाड़ी पर आवत कमेंट थोड़ी करबा। बताओ तो वही मार्टिन झूठा ही बोला थे यार। हाँ तो घर आएगी तब जा बतलाता ना भाई कुछ। घर आएगी तब बतला जाएगी। कोनो चीज रहा समझ में इनके रच के अगुआ ना के रखा। घरे आवा तब ओकर बाद बतला जाइए। मोड़ो बतलात है। कोनो चीज समझ के रच के मन नहीं करत है। गाड़ी पर रही थे कमेंट करी है। इतना हम ना जानते इतना मूर्ख बनो। रहा वहीं आराम से।
प्रणाम भैया। क्या हुआ भाई, पहुंच गए हो कि नहीं? आज हमारे भाई नहीं आए थे, आज लाइव सूना लग रहा था भैया। क्योंकि आपके इतने दुश्मन है, आपको देखने के लिए आते हैं हमारे लाइव में भाई। क्या बताएं हमारे, हमको तो आज यही सोच था। आज हम जान गए, आज हम जान गए कि हमारे प्रदीप भैया जहाँ रहेंगे वहाँ भीड़ लगेगा। आज पंडित जी भी नहीं आए हमारे ज्यादा लाइव में, ज्यादा कमेंट नहीं की, वो भी बहुत अ, आपके पीछे पड़े हैं भाई। अभी बाहर आया है, बोला अच्छा अच्छा भैया वही तो आवाज ही ठीक है। बाद में बताइए का भाव। सीताराम भैया सीताराम। गुरु जी प्रणाम, आप कैसी हैं? ठीक है भाई, ये भी आपके पीछे पड़े हैं। जब आप आते हो तभी लाइव में भीड़ लगाते हैं, आप नहीं रहते हो तो लाइव में भीड़ नहीं लगाते हैं भाई। आज हमको पता चला हमारे भाई। कोई बात नहीं भैया, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ काहे होई ना भैया। हाँ भैया पहुंच गए हो क्या? बोल तो रहे थे 9 बजे तक पहुंचेंगे। हम्म, बस, हम्म, हम्म, एक खिड़की बंद कर दो। हम्म, वो तो कर लिया पानी। अंदर का चाय बन लीजिए एकदम। बेटी को जो किन बोल ना बेटी को जो किन दे देखा लाइक नहीं किए हैं इनका पापा। देखो काई ले गाय हो हमारा चला जाए जितने जाला बहुत 6:15 पर बैठी थी, 5:25 कर दी। अच्छा अच्छा भैया।
अच्छा भाई। तबे तो यार देखा तो उसी में भौजी घर में पानी बरसाई दी, आनी चलाई दी, बहुत सारी दिन के लिए भी ठीक है सब। सोनवा देखा तो अकेले ही हुई गई ए बड़ा क्यों बनाओ लिया प्रदीप भैया, अभी आपके आपके बात के कारण हमको बहुत झेलना पड़ा है भाई। हाँ, किसी के चर्चा कभी मत लेना भाई लाइव में हमारे। अगर अब तो बतला हाँ सिंह दिन मने लगा पूछे हाँ ना तो हो नहीं के होना है हैं? सबके समझा भूल गए एकदम के सोना के चानी तो सिनाई मतलब बा। हम कहिए पूछी थे हाँ और व्हाट्सएप जो धरे हो ना ब्लॉक कर दिन का कहाँ हम नहीं नहीं धरे हुआ तो अपना तोरे के भले होए हम ऐसा बोलिए ऐसा कैसे बतंगल लड़की है जो बाटे बताओ हम कहूँ बात है हैं। तू घरे हो भले हम आए हम ब्लॉक कर दे ऐसा लड़की हम जो बाटे अपने अपने जिंदगी में हमका हम मौका ना है अपने काम अरे में जो हम उनके साथ हम बताए 1 महीने पहले उनका जो है उनका कहता कब हम उनसे बात भी न करी सीमा दीदी की लाइफ में आवत रहे ना तब वो उनसे बात न करी मैं कहती हूँ फिर पता नहीं कैसे एक दिन हमारे लाइफ में फिर फाट पड़ी है आप ना यार जब उनके माइक लाइफ में ना चलता रहा तो अपने सब कुछ भी कहते रहे हम तो कहो ना हमारे के माइक ज्यादा कुछ बहास फा नहीं रही है। हाँ अब उन्हें सबसे कहता हूँ है कि हम मम्मी से दूर रही थे पापा से दूर रही थे तो वह कल प्रदीप भैया पूछ ले है ना कि का तहार मम्मी तहार नाई है बस होता नहीं विधन बात बतंगड़ बहुत दूर तक और मैं हाँ भैया हम जो तो कहा कहे थे था पूछे जो खरीद बात लो खा बतंगड़ लेना इतना दूर तक फैले है ऐसे न लड़की है संसार में नहीं कुछ कहे कहवा ना है बस ऐसा 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 मने दूर रहे हम भैया तो कह दे हम पूछे तो जो ये करे कहा पूछे ले केहू के नाव जी लिया भैया हाँ काहे के कि आपे के जरन में हमारी जान हाँ, सब है घरे बाटे हाँ जवन हमार सपोर्टवा करा था हमार और सीमा दीदी बस ये जरन बा जवन हमें कहा करे मुंहे पे हमारे लाइफ में आवे या जी ना आवे जी बड़वार वो अपने लिए हो जी पटवार वो अपने लिए हो यहाँ गरीब से अमीर क्यों ना है लेकिन बस मैंने ये सोचा तो हमसे बड़ी मने उम्र में बा हमसे छोट बा ओकर लाज लिहाज करे वो फायदा उठावा तो हमका नहीं पसंद है जे सपोर्ट करे सपोर्ट मिले ना करे ना मिले लेकिन जौन बात सही वो ओकर मने बोलबे करे अब केहू से रोवा जिन सही कि नहीं है करे लेकिन जात भी जेकर भलाई करो भैया ना वह बुराई करे भाई हम तो ये कहा केहू खोए जेकर बहुत अच्छा समझत हो ना वो अच्छा ना भैया हम हो कि अच्छा समझा हमें का ना कहा थे हमका अच्छा समझा लेकिन हम सबके लिए बतावत है भैया हम वही में अपना बता देते भैया हम दुनिया है दुनिया जेका देख के अगर हाँ, जेकरे चापलूसी आवत है भैया वो हर जगह सोचा था हम ही सब जगह जीत लेत हई और हमरे से चापलूसी ना आवत भैया घुटाए घुटाए बतिया ना हजकरे लेफी हम जात बना सुनो अबे उनकरे साधना दीदी के लेफी उनका है ना सिया राम लोग गीत के घुमाए घुमाए जौन बाटे एक बतिया लियावत बा और क्या जौन होती है लोग बतिया लियावत बा कि हम बस हमारे ही लेफी बात कर हाँ और वो प्रदीप भाई की बात कर लो हमार कहीं तो फेल हुई ये उसका फिर दूसरे के नाम लिया था ओ ऐसे नहीं हर साल फेल हुई हूँ हाँ हाँ, कि जिक्र हम तो है प्रचार कि फेल हुई जो उसका रुआ था सबके कहीं जाए जब अगली साल पढ़ू हाँ हम्म,
दे दो खा उनको लिए सब फिर अच्छा मनसू को जितना संस्कार मन करे। बताओ तो नौटंकी करे। अपने सबसे रोज रोज कहता है ना, अपने एक बाद में बुरो लग जात उनका। हम तो कहूँ उनके इधर उनके मम्मी की लाइफ में कभो ना आई गए। हम जहाँ सोचा रहे को हमारे लाइफ में ना आवे तभी ठीक है, बीवी हम जाता ना रहे उनके लाइफ में। सीताराम भाई हमका उनका अपने तरह से कहीं मिले हमका तो कहो सी ऐसा मन ऐसा कहो मिले खो तुम कब के जौन बाटे उनका बुला ले तो मिल ले हो, लेकिन ऐसा मन ही से हमें मिले कि नहीं हमको ना जानता ही। इलाज में जा रही हूँ यही चर्चा। हाँ हाँ भैया एकदम हम भी सो रहे हैं, लेकिन सब लोग उनको समझा ही रहे हैं भाई। हम्म। बस हमारा और आपका बुराई चल रहा है और सीमा दीदी का बस। और इस समय सब अच्छे हैं। और वो जब ऐसी लड़की है हम तो जो कहा मुँह का हम नाम लेके। हाँ। पता नहीं कहाँ से हम हमसे जुड़ गई, हम तो समझ ही न पाए। हाँ। लेकिन हम तो एक महीने पहले उनसे पीछे छुड़ा ले रहे, देखा था बोलता ही ना रहे हम सीमा दीदी की लाइफ में जाई। कितना बोले हम बोली ना, लेकिन पता ना कैसे फिर हमारे लाइफ में आई गई ने। हाँ। पता ना कैसे कहाँ से आई गई हमारे लाइफ में। और हम खुश रहे कोई हमारे लाइफ में ना आवे। कम सपोर्ट हो लेकिन उस लड़की जो बाटे लाइफ में ना आवे। अब उनकर हम बोलो हटा ले, उनकर हर चीज हम समझ लगे उनका पहचानता ही ना है के है वो सब लड़की के। भैया हम कुछ बोले बस वह खाली आप ही पूछे रहे ना, और हमका तो हम कबो के कौन चीज पूछित नहीं है। यही नाते के का कर दो के का ना कर दो हमसे का मतलब लाग भैया। लेकिन सबके बस एक ही जरन बा। और देखा वॉचिंगियो चले लाग है। लाइफिए में आया वाचिंग चले लाग भैया। तब ठीक है रहे भैया, तोरे रहे से अगर हमारा वाचिंग चला तो ठीक है रहे। वाचिंग दिखत बदे। अब काल कैसे बोलत रही हैं, रात में सुने हो भैया। एक चीज सही सुनाए बतावत रही है कि का दिन मम्मी से दूर रही था, हम अपने बड़ी मम्मी के लगे का जरूरत बतावे की। हाँ। और जो बताएं तो आपके जो समझ में आए पूछ लिए बस वही बात लेके रटे हैं सबके लाइफिए में। अब हमारे लाइफ ही में ही तो उनका हम तुरंत हटाई दी हमारे लाइफ में उनका जरूरत ना है। पंडित जी पहले कहा था उनका पहचान किया उनके बोली भाषा से तबे वो हमसे बहुत पहले कहा था, लेकिन हम कही हमसे का मतलब लागा। तब से देखा वो उन सोनत बातें करब छोड़ दे रहे हैं। चाहे सुनते हुई तो का हम तो चाहते वो सुनत रह जाइए। जौन सबके लाइफ में जाए बोलते हम तो सबके लाइफ में जाब ना फालतू बकवास करे, लेकिन सुनते हुई तो आसे। हम तो चाहते वो सुनत रहते जो हमारे लाइफ में दोबारा कभी हुए नहीं करे। बहुत लोग सोचे थे हम ना सपोर्ट करब सपोर्ट होबे नहीं करे। ऐसा हुए साल भर हुए कोनो आफत आए ना।
हम्म, हम्म। आज गर्मा तो और जल्दी जल्दी खा लीजिए काम पे असल कंचो। तो जाए देता उनका जबान पर उनका नाम ही जिल लिया भाई कब हो। ये का देखा तो सूखा एक मन नहीं पे जाए देता नहीं वो बहुत चला गई उनका नाम ही नहीं ले कभी चाहिए इतना बहस करे थे उतना बहस हमारे ना आया जितना वो करा थी बहस और नहीं के नाते बहस हो दूसरों से करे पड़ा था ना आज कुछ ज्यादा ही बहस हो रहा अभी और हमको हमारी जान हमका हमारे जरन में सब बात सिर्फ कि काहे की सोच सब सोचत बना कि जैसे कि खाली सब ऊपर से दिखौटी में हमका सपोर्ट कर देता है 1 घंटा हम सब समझत है काहे कि अगर जरन ना रहा तो बोली भाषा ऐसा केहू ना निकलल अब सिर्फ एक जरन बा जो प्रदीप भैया हमारे लाइफ में आवत हम बस हमें जा हुए हमें और सीमा दीदी सपोर्ट करते हैं बस वही जरन बा सबकर बात चलत सबके तो मैंने फोन करके मना कर दिया था कि जिन जान के लाइफ में लेकिन अब इनका तो फोन करके मना ना कर पावत बा बस यही बा अभी तक हमारे को 0 वाचिंग दिखत रहा नहीं भाई चिंता हम काहे करेंगे हमको चिंता नहीं है भाई हाँ जैसे जब कुछ गलती रहे तब मने बोलो हाँ बताओ जब दूर रहने पर इतना जलन है अगर अगर जो है बगल वाले से कितना सबको सीमा दीदी तो बात ही छोड़ो हम तो सबसे दूर ही हैं तब के लिए इतना चल रहा है भाई सीमा दीदी आपसे नजदीक है ना भाई ये लेकिन आप तो अब दूर चले गए हो बम्बई फिर और था एक मिनट खाली भाई हाँ हाँ भाई सब लोग बोल देते हैं तो हम क्यों नहीं बोले भाई कब तक ज्यादा ज्यादा हम भी बेकार चीज है भैया हम्म सब तो लाइफिए में तो बोल रहे हैं उमा बड़ी दीदी नमस्ते प्रणाम दीदी कैसी हो बड़ी दीदी
हम भी ठीक हैं बड़ी दीदी, हम भी ठीक हैं। इधर भी बहुत तेज आंधी और बारिश हुआ था। इधर बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आया था बड़ी दीदी। अच्छा नहीं, लाइट आया है हमारे इधर, ये बात नहीं है, लेकिन सीताराम भैया। हमारे यहाँ भी थोड़ी देर में लाइट आई है। अच्छा अच्छा बड़ी दीदी। हाँ। ए उठ जा, उठिए उठिए, जा चावल ले खा लीजिए। एक तो खाओ इसे। देखो पहले आओ खेल, है ना? अभी नहीं भैया, अभी भोजन करने जा रहे हैं भाई इनको, बस यही जा रहे हैं करने भोजन। चलो आओ जाओ। चलो लो चावल खाओ। ना चाहे उठिए चावल खा लेगा। अच्छा खिया देखा सीताराम भैया। भैया रूम पर पहुंच गए हो कि नहीं, अभी रास्ते में हो? थके होंगे भाई, कल दुकान खोलना।
सोनी जी नमस्ते दीदी, राम राम।
जिसको आप सबसे ज्यादा मानती हो उसी से पूछना, वो भी हमसे बताए थे। वही हमसे बताए थे कि सोनी दीदी हमको मना की हैं आपके लाइव में आने के लिए, आपके बहुत करीबी हैं। आ- आज तो हम बता रहे हैं सोनी दीदी, अभी तक तो नहीं बता रहे थे। वो वो औरत आपकी बहुत करीबी हैं, इतना समझ लो। वो आपसे बात भी करती हैं फोन में। वही बताई थी हमको कि सोनी दीदी मना करी है कि प्रिया के लाइव में मत जाया करो। अभी तक तो हम नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब बता दिए हैं। ठीक है प्रिया बहुत। हाँ तो शिवानी दीदी से आप बोल रही थी ना, लेकिन जिससे बोल रही थी वो हमको सब बताई हैं। लेकिन हम कभी भी आपसे कुछ वो कुछ पूछे नहीं है कि सोनी दीदी हमें क्यों आप ऐसे बोली हो। हाँ क्या हो गए? हमने आज 2 महीना पहले ही सुने थे, तो लेकिन हमने बोला कि हमको क्या जरूरत है, जिसका मन हो लाइव में आए, ना मन हो ना आए। हम काहे जबरदस्ती करूं भैया, मत आया करो तू भी। तब वो भी छोड़ दी है, वो भी नहीं आती हैं लाइव में, ये बात नहीं है। यहाँ आप तो समझ जाओगे अपने आप कौन कह रहा था। इसीलिए ना तो हम दिखावा करते हैं, ना हमको दिखावा पसंद है। हाँ। एक लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट नहीं होगा। हाँ अरे साल भर की बात होगा, बहुत लोग हैं साल भर तक रुके हैं। हम तो उनका नाम अब जबान पे नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बात जब आप कर रही हो, हम किससे कहे हैं तब हम बोल रहे हैं। हम्म हमारा तब तो ये भी नहीं बोल रहे थे कि आप कही हो, लेकिन आज जब बोल रहे हो हम किसको मना किए, तो हम बोल दिए हैं कि आप जिससे मना की हो बता, वो आपसे बात भी करती हैं। हाँ नहीं तो हम बात नहीं, जब अगला हमारे को चिरौरी की है कि मत करना, हम सोचे बात यहीं पर खत्म कर दूं। फिर हमने जान गया है तो हम उससे भी बात करना छोड़ दिए हैं। नहीं तो कभी पूछ लेना, अगर जिससे कही होगी तो पूछ लेना कि क्या प्रिया आपसे बात करती हैं। वो हमसे जबरदस्ती नंबर मांगी थी सब कुछ बताने के लिए, लेकिन हम समझ गए कि हमारा हमसे भी जो बात निकलेगा मुंह से वो भी बताएंगे आपसे। हाँ जैसे आपके बात हमसे बता रही हैं, तो हमारा भी बात तो आपसे बताएंगे। और सोना की बात है, सोना सोना खुद ही अपने सबसे ही बोलती हैं। इसीलिए हम तो कल भी बात हो रहा था, तब हम तभी नहीं बोले, हम बोले कि जो बता। इतना नाम हमको नहीं याद है अब किसी का।
क्या गलती कर रहे हैं उमेश भैया, आप ही बताओ। उमेश भैया गलती भी बताओ। हेमा का टीवी में करा हम नहीं सोए हम कि पानी नहीं करा कंजे लगा दे। पहली गलती है कसम से। कसम किस बात की भाई? हाँ, कसम किस बात की भाई? हमको जो कहना है वो बस वो रही, हम नहीं कहे हैं। अब बस हम वही सुने हैं बस, और क्या। अब क्या बात सच है क्या नहीं, और ना तो हम जानते हैं ना तो वो जानती हैं, बस बात खत्म। समय पड़ने पर वो भी बता देंगे, अभी नहीं। सामने से बताएंगे, दूर से नहीं बताएंगे। जब भयो समय पड़ने पर वो भी बता, हम इतना डरते नहीं है किसी के जो है नहीं बताएंगे, लेकिन हम लाइव में नहीं बताएंगे ना। हाँ नुना नहीं वो फ्रीजिंग धरू। हम तो आपके नाम नहीं लिए हैं इसमें, हम सबका बात कर रहे हैं। हम तो आपका नाम भी नहीं लिए हैं कभी। हम तो मना भी करते हैं कि हमारे लाइफ में किसी का नाम नहीं लिया जाए, हम सबका बात कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। जान बना वो बाबा बोलता है वो बोलता है। हाँ बोले दिख रहे। इधर है देखो, इधर है देखो। देखिए सोनी दीदी, हमारा कहना ये है, ना तो हम हमेशा मतलब कि किसी के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, बात जो हम आपके लाइव में गए, हाँ, और ना तो हम सोना को कुछ बोलते हैं ना, वो हमारे लाइव में 1 महीना नहीं आए थे, कभी हम उनको बुलाए भी नहीं थे कि सोना आ जाओ हमारे लाइव में। हाँ,
और जो बार बार यही नाम अभी देख रहे हैं, साधना दीदी के लाइव में, फिर प्रिया की लाइव में गए थे, प्रिया के लाइव में, प्रिया की लाइव में क्या बदनाम कर रही प्रिया, प्रिया हाँ पहले अपना सहूर समझाओ। सबसे रो रही हो कि हम अपना मुसीबत बता देंगे तो आप हमको गले लगाकर रोने लगोगी, सोना बोल रही है हाँ। तो जब सबसे ऐसे बताओगी तो सब सोचेंगे ये क्या मुसीबत पड़ गया है सोना के ऊपर भाई। हाँ दिनेश भाई राधे राधे। हर बात जबरदस्ती नहीं, मतलब अपना ही किया जाता है, चाहे जो हो, चाहे हम हो चाहे जो हो। क्योंकि कोई कोई है बात बता देते हैं लेकिन डरते हैं हाँ। कोई कोई बात बता देते हैं फिर भी डरते हैं, लेकिन हम इतना हमको जो बात वही सही है तो सही है। हम ये भी नहीं बोले कि नहीं आओ, हम आपका अच्छे से सपोर्ट करेंगे। हाँ भैया हम नहीं सपोर्ट करते हैं, मत आओ लाइव में, जो अगर हमसे कहेगा। नहीं सपोर्ट, विश्वास है तो सपोर्ट करो, नहीं ना विश्वास हो तो नहीं सपोर्ट करो। हमें नहीं डर है, हमें नहीं, हम दूसरे के बारे में हम सोचते हैं, हमें डर नहीं है। हम्म। हम क्यों डरे। कौन हमारा किसी से कुछ वजह है कि हम बिना हमारे उनका नहीं चलेगा, उनका बिना हमारे नहीं चलेगा, बताओ। नहीं उमेश भाई, अभी हम जब से लाइव चला रहे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं। और शिवानी दीदी से बोली भी हैं कि अभी हमको 3 महीना ही लाइव चलाना नहीं हुआ, हमारे जलने वाले इतने हो गए, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताएंगे, लाइव में नहीं बताएंगे। लाइव में बताकर क्या करेंगे, दूर से, दूर से कुछ नहीं होता है। कभी सामने होंगे तो बता देंगे, बताने में हमको क्या जा रहा है। कौन वो हमारे। भाभी जी मेरा नाम बता दो, कहेगा आपका नाम बता दे भाई। राधे राधे दिनेश भाई। और बताओ दिनेश भाई, भोजन हो गया। आपको कहे बोले उमेश भैया हाँ, जो हमको बोलेगा हम उसी से बात करेंगे, उसी से को कहेंगे। अच्छा अच्छा।
आज तो सोना बहन हमारी नाम ले रही थी आपके लाइव में, तो आप क्यों नहीं मना की? हम्म, नहीं तो बोल दिए ना तो कि हमारे लाइव में नाम मत लो। कभी शायद अपनी लेटी है। की है वो? नहीं भाई, हमारे पास प्रूफ नहीं है। सब अपने काम से मतलब रखो, बस बात खत्म। हमारे पास प्रूफ नहीं है किसी को दिखाने के लिए, ना तो हम दिखा ही सकते हैं। नहीं तो हम विश्वास भी नहीं किए हैं। जो आप बोली है कि हमने किसको मना किए हैं। जिसके मन में जो है सोचे और ना सोचे, हमें पास कोई प्रूफ नहीं है। हम भगवान नहीं है कि हम इतना प्रूफ दिखाएंगे के लिए। प्रूफ दिखाने के चक्कर में बहुत लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। उसके मन में जो है वही सोचे।